Srimati Jaya Bachchan. Madam, from your party there are 2 speakers जी सर, मैं कोशिश करूंगी. थैंक यू. and your time allotted is only 7 minutes. Sir, firstly, I'd like to congratulate Shri Arun Jaitley ji, Dr. Karan Singh, and Sharad Yadav ji for the awards given to them. It's wonderful. Out of outstanding parliamentarian awards given over the years, there have been 20. इसमें सिर्फ एक महिला है, सुषमा स्वराज जी. क्या इस पार्लियामेंट में इतने सालों में कोई और डिजर्विंग महिला पार्लियामेंटेरियन नहीं रही? नहीं, मैं सर, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहती हूँ. मैं कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगी. मुझे इस हाउस में काफ़ी दिन हो गए. मैंने यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ जाते देखा, और साथ साथ इनके विचार भी बदल गए. इसको कहते हैं किस्सा कुर्सी का. मगर बीच में जो हम लोग बैठे हैं, हम लोग वैसे नहीं हैं. समय आने पर शीशा दिखाते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, ऑपोजिशन हो. I have few observations, sir, and these are the root causes of many of the ills in our society. Sir, पहला मेरा एक observation है. Whatever I am going to say has no reflection on the lady minister's capabilities and capacity and competence or her predecessors. बट ऐसा क्यों होता है कि जब भी विमेन और चाइल्ड के बारे में मिनिस्ट्री की बातें होती हैं, इट्स ऑलवेज अ वुमन heading the ministry? I think it's very important for a man to head this department. I mean, with due respects to the minister, because if they are at the helm of affairs, they will realize what the women and children feel or go through. Just because a woman is a mother, she has to feel for children. Because she's a woman, she's the right representative. She is. But it is not for it is not important. We are conveying to the nation that only women are capable of such jobs, not men. I think we need to correct it, and since we are supposedly the House of Elders, House of Sensible People, the sense should start from here. Sir, my second observation in this House has been that there is a very popular, democratically elected Chief Minister of a very large state, who is also an ally of yours. Some very derogatory remarks were made about her from a foreign country. And what did we do? We just said, we condemn. We showed our displeasure by saying we condemn. We do not welcome such rhetorics. And that was it. बस उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया. उस कंट्री ने एक बहुत ही मामूली तरीके से माफ़ी मांगी और हमने एक्सेप्ट कर लिया और हम बैठ गए. Wrong message, sir. It's a very wrong message you're sending to the rest of the country. Sir, I had given a question on the 30th of July about women personnel in paramilitary police forces. The government's response was, and I quote, traditionally, women had not been inducted into the police force as it was thought that to maintain law and order, men were preferable. What kind of an answer is this? ये किसने जवाब दिया, मैं जानना चाहती हूँ. अब मंत्री कितने जवाब देते हैं मुझे पता नहीं, और जिस अफसर ने भी लिखा है उनको बुलाना चाहिए, मैं उनसे मिलना चाहूँगी. सर, हाल ही में एक चौथा ऑब्जर्वेशन है. मैं इस हाउस की बात कर रही हूँ. हाल ही में WTO के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, और हमारी जो मंत्री जी थी वो जवाब दे रही थी. उन्होंने कोई चीज़ बड़े एम्फेटिकली कहा.
उसके लिए इतना बड़ा बवाल हो गया, सबने कहा यू आर बीइंग वेरी अग्रेसिव. शी वॉज नॉट बीइंग अग्रेसिव, शी वॉज बीइंग emphatic. She was trying to make a point. Can you imagine what would have happened if there was a man doing that? If he had taken an aggressive position, ab tak आस्तीनें ऊपर हो जाती है. I've seen such scenes in this house. Men don't have the competence to handle criticism. But the same subject came up another day, and the ex-minister of the same department was so aggressive, and the house was mum. Nobody said a word. Sir, this is supposed to be a house of elders, sensible people. Where is the sense? Where is the protection? Protection does not have to be physical. It has to be mental. It has to be also suggestive. None. It does not exist here. I want to bring this to your notice. Why are these double standards? I don't understand. Sir, last week in the other house, a very senior member of a very important party. Joyji, sorry, you do not discuss about other house. I'm not discussing, sir. A statement was publicly made. Yes. A reference was made that daughters, sisters, and girls of the country to dress in a dignified way and uphold the tradition of Indian culture. I would like to ask this gentleman, what is the definition of dignified and traditional culture? Is the fixing of the veshti in the central hall traditional, dignified, when there are so many women sitting in that room? It's very sad, sir. This moral policing must stop. आप इस डिपार्टमेंट को चाहे जितना चाहे पैसे दे दीजिए, जब तक इस देश के पुरुष और उनकी थिंकिंग नहीं बदलेगी, ये नहीं बदल सकता. One minute left. I will try, sir. Sir, मुझे याद है कि बदायूं के ऊपर बड़ा र्यूमर फैलाया गया और आज रिजल्ट आया है सीबीआई का. इट वाज ऑनर किलिंग. दिस इज रॉन्ग, सर. समवेयर यू हैव टू कंट्रोल मीडिया, और जिसकी वजह से अ वेल नोन जर्नलिस्ट एंड अ फिक्शन राइटर हैड सेड जया बच्चन शुड रिजाइन. I mean, it's ridiculous. You have not even waited for the report to come. और आपने अफवाह फैला दी. जो चाहे आता है बोल देता है. हमारे सदस्य उस दिन कह रहे थे प्रेसिडेंट्स रूल आना चाहिए. प्रेसिडेंट्स रूल तो आपके पास भी आना चाहिए. इससे बदतर थे, इससे बदतर थे. Stop it now. Joyji, छोड़ दीजिए. Please address the chair. Stop it now. Please address the chair. This is the mentality, sir. Please address the chair. Yes, exactly. सर, हमारी पार्टी ने विमेंस रिजर्वेशन के ऊपर स्टैंड लिया. उन्होंने कहा ये 30% जो आप ब्लैंकेटली कर रहे हैं, इसको मत करिए. आप ये जिम्मेदारी पार्टी की लगाइए कि 30% रिजर्वेशन पार्टी के लोग विमेन के लिए रखें, और जो पार्टी इसको फॉलो नहीं करती उसको आप डिस्क्वालीफाई करिए. मगर अफवाह क्या फैलाया गया कि समाजवादी पार्टी इज अगेंस्ट विमेन्स रिजर्वेशन बिल. इट्स रबिश एंड इट्स यू पीपल हु डिड इट. हाँ जी. Sorry, Joyji. मैं आपको कैमरा के फुटेज दिखा दूंगी. Sorry, Joyji, your time is over. Your time is over. Sir, I want you Please to speak conclude. about children. Please conclude, because I'm a mother, I am grandmother. helpless. Helpless. Because Confused I of the have been instructed. I'm so sorry. I've not been able to say anything about the children. I have already given you 1 minute more than the allotted I'm very time. obliged to you, sir. I'm really ashamed that we have a project, we have a discussion on. अभी budget के ऊपर आपने कितने 4 दिन 5 दिन WTO के ऊपर women की बात हुई तो shall be expunged. Sorry? The word rubbish should be expunged. Okay, that's fine.
I'm sorry, I got all emotionally carried. I'm an emotional person. बुद्धिजीवी नहीं हूँ सर, हृदयजीवी। Now, सर ये टीवी पे उस दिन दिखाया गया कि बिहार में मिड डे मील में बहुत कीड़े मकोड़े थे और टीवी चैनल ने दिखा दिया, उसके बाद जो सरकार ने उसके ऊपर काम किया उसको नहीं बताया। I think government should take notice of this, because if the channel has the liberty to show what wrong has happened, when the corrective action has been taken, must also be reported by the same channel. And I think government must insist on this. okay, please conclude. साहब अंत में No, I am sorry. Please conclude. Please. Okay, sir. And then Your next speaker command, is Dr. I obey your command. Next But speaker is Dr. सर T.N. जब अब घर में यहाँ सब उस दिन जो they were talking about the भारत रत्न की बात, तो मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ इस हाउस में कि हमारे यहाँ सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, ये भी इस अवार्ड के लायक हैं सर। Thank you very much. Thank you.